Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Today we have a very special episode. Today we have Ridhima from Namhya Foods, who have been featured in Shark Tank India. Hello Ridhima ma'am, welcome to Placement Buddies. Hi, thank you so much for calling. हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताओ. Yes, I am founder at Namhya Foods. Namhya Foods is India's first Ayurvedic brand in the preventive healthcare segment. So 2019 में हमने ये समझा कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी कॉमन इश्यूज से क्या बिना गोली खाए या बिना एलोपैथिक मेडिसिन लिए भी कोई छुटकारा है. And I think because my grandparents core business was Ayurveda, right? And that's like almost 80 years back. And we tried sort of modernizing Ayurveda, which is long forgotten, into everybody's lifestyle, so that everybody can plug in these products and prevent themselves from issues like BP, cholesterol, which actually become the biggest reasons for why somebody gets into a major disease. मतलब अगर आप देखें statistics देखेंगे तो 70% जो इश्यूज हैं या जो डिजीजेस हैं वो लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से हो रहे हैं. तो क्या हम इन लाइफस्टाइल इश्यूज को प्रिवेंट कर सकते हैं? इस पर हमने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम नम्या फूड्स है. मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसे जरूर रीपैकेज करा है, बट ये सारी फॉर्मुलेशंस मुझे लगता है कि हमारे इंडियन आयुर्वेदा में थी, इंडियन कल्चर में थी. बहुत ज़्यादा इसे स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा इसे किसी ने उठाया नहीं, और हमें लगा कि ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें. सो दैट्स व्हाट वी डू. करेक्ट. सो मैम, शार्क टैंक से पहले व्हाट वाज नाम्या फूड्स ऑल अबाउट, एंड शार्क टैंक के बाद कैसा चेंज आया नाम्या फूड्स में? Guys, before we move ahead, you might not know that many of you, about 93% of you, do not subscribe to the channel. Please subscribe to our channel, turn on the notifications, do press the bell icon. I request you all. Now let's continue. हमारी जो ब्रांड रिकॉग्निशन है, जो ब्रांड अवेयरनेस है, विच इज द बेसिक फनल इन अ मार्केटिंग फनल, वो शायद आई थिंक बहुत इंक्रीमेंटली ग्रो करी. बहुत लोगों ने हमको जाना पहचाना आफ्टर शार्क टैंक. तो आई थिंक वो स्केल मिल गया हमें, जो शायद बहुत ज्यादा मार्केटिंग के बाद हमें मिलता. ऑल्सो एक चीज ऑब्जर्व करी है मैंने, क्योंकि हम अभी भी छोटे ब्रांड हैं, बहुत कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे जाके कस्टमर से समझते हैं क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए. तो आई थिंक आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ वेरी यंग पीपल हु आर trying to believe in Ayurveda, or who are sort of the inclination towards Ayurveda has sort of gone a little up because of Shark Tank. तो I think वो एक basic fundamental level पे भी हमें बहुत recognition मिला. And I think जो acceptance है आयुर्वेदा का in general या नई generation में इस तरह के products के साथ जो acceptance है, वो मुझे लगता है Shark Tank के बाद बड़ा है हमारा. करेक्ट. सो मैम, जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचा, व्हेन यू थॉट कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है आगे जाके, तब आपने आयुर्वेदा रिलेटेड ही क्यों सोचा? लाइक आयुर्वेदा का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में? या मैंने ना एक्चुअली ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. हालांकि मैं एंटरप्रेन्योर्स की फैमिली से आती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स नहीं कह सकते, बिजनेस फैमिली से आती हूँ. बट मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे यही करना है. मैं खुश थी जो मैं काम कर रही थी, एंड आई वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब इन अ ब्रांड मैनेजमेंट रोल. बट एक्चुअली मेरे माय व्हाइल दिस वाज अ lineage that my grandfather had started, nobody was practicing it at my home, right? It was a long forgotten story. And I think with the generation that I come from, everybody was a doctor or an engineer, right? And I was good at studies, so nobody even thought that this could practicing Ayurveda full time in some form could also become like like mainstream, right? But in 2019, my father was suffering from liver cirrhosis that time, and the condition worsened. और इससे पहले मैं कभी इतनी सेंसिटिव नहीं थी इस पूरी बात को लेकर कि वो किस इंटेंसिटी की पेन से गुजर रहे हैं. एंड देन दैट वाज अ टाइम व्हेन मैं हॉस्पिटल में काफी रहा करती थी. दिस वाज नॉट 2019 एक्चुअली. और दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि किसी को पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा क्या होता है. एक तो सेकेंडरी हो गया, बट
खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है हीलिंग प्रोसेस के लिए, वो कॉन्सेप्ट किसी को ज्यादा था नहीं. इवन द डाइटिशियंस वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग फॉर समथिंग एज बेसिक एज लिवर सिरोसिस, वेयर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं, आप खाना कैसे और किस तरीके से खा रहे हैं, कितना पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं. तो ये कुछ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस किया, बट आई थिंक एवरीथिंग गॉट टुगेदर दैट टाइम. जो भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे मेरे, या फिर मेरे फादर का इशू था, वो ट्रिगर भी एक बना टू स्टार्ट द ब्रांड. सो आई थिंक देयर वर मल्टीपल रीजंस, बट इफ आई हैड टू गिव वन, आई थिंक इट वाज माय फादर्स इशू दैट टाइम, जो मुझे लगा कि नहीं, अभी ये फुल टाइम करना चाहिए. ओके। और जो फर्स्ट टाइम आपने वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तब आपको क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और उसको कैसे ओवरकम किया आपने? यार सच्ची बताऊं तो मतलब कुछ बहुत सोचकर नहीं किया था मैंने. मेरे को मैं बहुत ज्यादा ही पैशनेट हो गई थी उस समय. मुझे लगा कि ये तो मतलब किसी को कैसे नहीं पता है, और हमें पता है और हम क्यों नहीं कर रहे. मतलब इट हैज टू बी अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमें लिनिएज में कुछ चीज मिली है और हम तब भी लोगों की मदद ना कर पाए, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, राइट. इट वाज करेक्ट। नॉट सिंपैथी एम्पैथी. तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा रीजन था. तो बहुत ज्यादा सोच के नहीं किया था मैंने, ऑनेस्टली. आई डिडंट थिंक वेयर इट वाज गोइंग, बट आई जस्ट फेल्ट दैट दिस वाज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. एंड पहले 6-8 महीने तो दे वर वेरी हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ अ फेज. 4 प्रोडक्ट करते थे, फिर ट्रायल्स में जाते थे, फिर कस्टमर को जाया करता था, फिर फीडबैक्स आती थी, और बहुत अनश्योर थी मैं खुद. कस्टमर तो फिर भी मुझे अच्छा फीडबैक देता था, मैं खुद ही बहुत अनश्योर थी, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से थी, हर चीज पे डाउट करने की आदत है. तो जब तक पूरा एनालिसिस क्लियर ना हो तो आई थॉट कि नहीं, ये ऐसे कैसे हम करेंगे. तो आई थिंक it didn't take a very concrete structure in the first 8-9 months. It was a period of lot of trials, lot of pilot runs, lot of sampling, right. Getting it tested from the labs, all of that stuff. And it was a very we knew Ayurveda, we knew formulations, we were probably practicing it for a very long time, but इसको कभी medical रूप नहीं दिया था हमने, करेक्ट। right. And I had to be double assured, by before I could do that pan India, राइट. सो तो वो सब हुआ. और फिर जब एक पहले 4 महीने के बाद जब लोगों को रिजल्ट आने लग गए, लोग वापस हमें कॉल करने लग गए कि अरे आपने तो क्या प्रोडक्ट बनाया, दिस हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड. तो अगेन माय डाउटफुल माइंड वाज लाइक कि अच्छा 4 लोगों को फर्क आया है पर फिर भी हो नहीं सकता. सो आई थिंक आई ओनली टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू consolidate my thoughts on it. And once I had sizable data, I was like, this is going to go big now. तो I think मैंने जो year on year, ये जो financial planning या projections, ये सब मैंने पहले साल के बाद करी. पहले साल में सिर्फ टेस्टिंग और ट्रायल मेथड में थी, और हमने करीबन 2 साल लगाए सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम करने में. हमने कुछ बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं किया, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर रखा. तो आइडिया यही था कि यार हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद करेंगे, हम क्वालिटी भी खुद कंट्रोल करेंगे, और हम थर्ड पार्टी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मटेरियल और क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल लूज हो जाता है. तो वो सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स थे उनको ध्यान रखा, क्योंकि मैं स्टार्टअप नहीं चलाना चाह रही थी, मैं एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना चाह रही थी. आई डिडंट वांट टू मेक अ स्टार्टअप आउट ऑफ इट, बिकॉज स्टार्टअप अगेन मीन्स अ लॉट ऑफ बर्निंग ऑफ मनी. It's all about the time that you're investing, right? I didn't start with that thought. I think my idea was कि अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको कस्टमर को देंगे, एंड लेट कस्टमर डिसाइड वेयर इट हैज टू गो. एंड आई थिंक इंटेंशन क्लियर था, इंटेंशन राइट था, तो उसके साथ साथ ग्रोथ भी होती गई. फिर इतनी ग्रोथ हो गई कि कस्टमर बोलने लगे कि आपने यहाँ क्यों नहीं रिटेल आउटलेट खोला है, वहां क्यों नहीं खोला है. एंड वी स्टिल गेट दोज क्वेरीज कि आप ऑफलाइन में क्यों नहीं है. तो आई थिंक वी वर एक्चुअली ड्रिवन बाय द कस्टमर. आई थिंक द ओनली राइट थिंग दैट वी डिड प्रॉब्ली वाज दैट हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया और हमने कस्टमर को बहुत ही क्लोजली सुना. मतलब हमें आज भी पता है कि कहीं कहीं हमारी डिलीवरी बहुत लेट पहुंचती है या हमारा डब्बा फटा हुआ जाता है. तो वी आर राइट देयर अलोंग विद द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है. तो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड. करेक्ट। और जो मैम हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, या कुछ लोग अभी कॉर्पोरेट जॉब भी करते होंगे, आगे जाके उनको एक अपना स्टार्टअप खोलने का आइडिया है, सो आपके अकॉर्डिंग उन लोगों का क्या अप्रोच रहना चाहिए फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? या देखो, आई थिंक
वेरी ऑनेस्टली आई टेल यू, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमने बहुत काम कर लिया है ऐसी बातें करने के लिए. करीबन 3 साल हुए हैं हमें ये काम करते हुए, और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है. मतलब हम खुद ही इतनी गलतियां कर रहे हैं कि किसी को क्या सलाह देंगे. बट अगर आप मुझसे सच में पूछोगे तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने ये काम पेंडेमिक में शुरू किया था, और ऐसे दिन होते थे कि लॉजिस्टिक्स बंद हो गया. अभी ई कॉमर्स ब्रांड में लॉजिस्टिक्स बंद हो गया तो इट्स अ बिग डील, राइट? करेक्ट. आपको नहीं पता, आपकी सेल्स अचानक से जीरो हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी ऑफ. तो काफी डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी. कुछ मेरे को याद है इनिशियली मैं 4-5 दिन उदास होकर, मतलब आई वुड नॉट डू एनीथिंग, राइट? तो इनकंसिस्टेंसीज हुई या जो भी चीजें हुई, तो आई थिंक it's very important to be consistent. If today I had to change anything, or when I look back in the last 2.5 years, I think this is the only thing that I would change. That I wish I would have been more consistent, and probably would have also believed more on myself. क्योंकि ये दोनों ही चीजें, they are complementary to each other. The more you believe in yourself, the more the more consistency you would have in what you do. So that's the only suggestion I would give to young entrepreneurs. राइट. एंड मैम, इन्वेस्टमेंट एक Hmm. एंटरप्रेन्योर के लिए या एक स्टार्टअप के लिए कितना मैटर करती है? एंड सिंस आप शार्क टैंक में गए, आपको अमन सर से इन्वेस्टमेंट मिला, सो हाउ डिड इट चेंज, लाइक उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा नामिया फूड्स पे? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम वी वर अ ब्रांड who were more interested in the panel, or the people that we get on the advisory board for the brand, because I'm a single entrepreneur, right? There is no co-founder with. तो हमारे लिए सही ब्रेन आना कंपनी में, जो एक ऑल्टरनेट या एक अलग प्रोस्पेक्टिव दे सके. एज ह्यूमन बींग्स वी हैव लिमिटेड कैपेसिटीज, राइट? इफ आई राइट. थिंक इन एक्स वे, then I can only think in X way, right? I might attain a skill called Y. It might take time, it might take experience, but it's always good to have people, who come from different backgrounds, who know probably more than you. तो मेरे को मेरा रिक्वायरमेंट वो था. पैसा इतना शायद रिक्वायरमेंट नहीं था. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एंड आई कुड बी रॉन्ग, राइट? आई डोंट नो, बट I think businesses don't run on funding. Fundings are usually used to go from 1 to 100, once you've traveled the journey of 0 to 1. And I also feel that just because you have funding or you don't have funding will not matter a lot. As long as your idea is strong, as long as your execution is strong, and as long as your intention to do that business is right. So I believe in the fundamentals of how businesses are done, right? So I don't look at it like that. Awesome. So ma'am, now let's talk about Namhya Foods organization structure. Namhya Foods में कौन कौन से प्रोफाइल्स में अभी currently openings है, या कौन कौन से प्रोफाइल में लोग काम करते हैं जनरली? देखिए, हमारे यहाँ बहुत ही see, right now we are aggressively hiring. In fact, the next 2 months, actually 3 months, will be a lot more about hiring, because we've traveled the journey of 0 to 1. And now I'm also sort of learning how to go from 1 to 100. And I think hiring then becomes the most important part of the journey from 1 to 100, right? You Right. need people who think like you, who are as passionate as you are for the brand. And skill set बहुत आसान है market में मिलना, but intention और passion थोड़ा सा मुश्किल रहता है. तो but to answer your question, yes, we do have openings in marketing right now. We are looking for a category manager, which comes with some experience in D2C or e-commerce, right? Not a very old person, but probably with 2 to 3 years of experience max. We need young energy in the brand. We're also looking for people in content and blogging and social media, basically content creation. So that's one that we are looking, and then we are looking for 6 interns, which will again be a lot about social media, performance marketing, blog writing, content creation. So that's the role that we are currently looking at. But anything that we are looking at currently will be work from home. And will be everything related to marketing. So that's what we are looking for. Correct. So ma'am, what will be the perks and cons of joining Namhya Foods for those who will want to join? It depends on the role, right?
कि आप किस रोल पे ज्वाइन कर रहे हैं, बट whatever role you join, whatever position you join, and whatever salaries then we finally freeze, I think there are two things that I can vouch for. One, the kind of experience and the kind of work quality that we give is unparalleled, because we are scaling up at a very rapid scale. That also means that there'll be different things, different hats that you'll wear, right? So if you're somebody who's passionate, has fire in the belly, want to do big in life, I think this is a good place to start, So I think the experience will be, if my own experience has been so great, and it's been an exciting journey, and whoever is in the team right now, we are one family now. It's been exciting for everybody. So I think if you're thinking of, increasing your horizon and doing, taking up opportunities, leading them, finishing them end to end, I think this is the place that you should be. If you're doing it just for the sake of कि हाँ मतलब कॉलेज में internship के लिए interview देना था और we had to get a certificate, this is the wrong place to be. In fact, there have been interns who came with that intention, and we gave them the certificate, and we requested them not to work with us because we need good brains who are working on the brand. Most importantly, the intention of what they come with, So somebody who's keen to learn will definitely take away a lot of things. Yeah, and for those who are watching this right now, and if he or she is interested to apply, what's the procedure? It's a very simple procedure. Usually interns have 1 year between me and the work, right? So there's somebody who sort of manages them directly, and then I sort of come in on a weekly basis, giving out my input, my suggestions, all of that. The category manager role I will hire personally, but nevertheless, you can reach out to ridhima@namhyafoods.com. I am very, very active, and I respond to usually all mails. So if you're selected, definitely you will get a call from me directly. For the category manager role again, but yes, for internships, you can also apply to vcare@namhyafoods.com. So I will probably get you might have a delay in my response, but at vcare, you will definitely get a very prompt response. Yeah. Okay, Ridhima ma'am. So before wrapping it up, do you want to give any sort of tips to our young entrepreneurs or the ones who are going to start their own startup? I think first, I think there are no shortcuts. It's a lot of hard work. So if you are joining or if you're wanting to become an entrepreneur for the wrong reasons, which is fame, money, I think you need to think again. Yeah. Second, as I said, consistency is very important. So whatever you do, be very consistent. And third, I would probably say that do a good pilot run, do a good experiment before you jump in and sort of expand the business, because at smaller scales, if you're making a mistake, it's still easier to mend it. But at larger scales, there is this brand image which is at stake. There are a lot of things which are at stake, right? So the repercussions are way too higher. So don't be in a lot of rush to launch it, but sort of don't also delay it. So it's the right balance of where you need to fit in and sort of launch it. Correct. So with that note, let's wrap it up here then. Thank you so much again, ma'am, for joining Placement Buddies and sharing your valuable experience. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you. It was my pleasure, ma'am.